जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतगंज मांडा प्रयागराज टी थॉमस पब्लिक स्कूल बहुत ही सुंदर परेड ग्राउंड में झंडारोपण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य जी और मैनेजमेंट अंगद मौर्य जी का काफ़ी सहयोग रहा। अध्यापक लोगों की बहुत ही कड़ी मेहनत रही, जैसे कि अंजलि मौर्य, अस्मिता शुक्ला, सरिता मौर्य, जानकी स्वाति द्विवेदी साहब, बानो शाही बानो, लक्ष्मी विपुल, राजेश पाठक, योगेंद्र जी, डीके सर आदि सभी का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही बच्चों ने मेहनत की और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। परेड ग्राउंड में बहुत कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिली। झंडारोहण भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। वी न्यूज मीडिया के लिए बलराम शर्मा की रिपोर्ट। Dear students, we have all gathered here to celebrate the auspicious occasion of this Independence Day on 15th August. Many best wishes and congratulations to all of you for this auspicious occasion. Today on this auspicious occasion, I have got the opportunity to address you all, to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. This is our 78th Independence Day celebration. Friends, as we know that August 15th is a day of honor and pride for every Indian. On 15th August 1947, all our freedom fighters and revolutionaries freed our country from the British Empire by putting their lives at stake. So, we celebrate this day historically in their memory and honors. Because of this day, we got freedom from British rule, which is incomparable. The most important contribution to the independence of our country has been made by Mahatma Gandhi, who forced him to leave India by using weapons like truth and non-violence against the British rule. There were many other freedom fighters like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, etc. We contributed to the independence of India and liberated the country from British slavery. Today, 78 years after independence, our country is moving towards progress in every field. Our country is writing a new chapter every day in different fields like military strength, education, technology, sports, and many other fields. It is writing a new dimension every day. After 15 August 1947, our agriculture sector has also changed a lot. After independence, we produce more quantities of crops using new techniques in agriculture and new methods of growing crops. And today, our country is at the forefront of exporting grains.
Today, after independence, we have made a lot of progress in the field of science as well.